Hello students, in this lecture we will see numerical number 5 based on transient analysis. So if you observe the circuit carefully, this is parallel RC network and they are asking you to calculate voltage, derivative, first derivative of the voltage and second derivative of the voltage with respect to time at t is equal to 0 plus. So आपको मालूम है you have to analyze the circuit at t is equal to 0 minus, that means just before opening of the switch. ये switch को analyze कर दीजिए, ये diagram देखिए, ये arrow इधर है, that means switch पहले close था और बाद में वो open हो गया है. So t is equal to 0 minus पे switch आपका close था. Second आपको t is equal to 0 plus पे analyze करने का है जब भी आपका switch open हो गया है. And third one for t greater than 0. And we will obtain v dv by dt and the second derivative voltage with respect to time. चलो तो एनालाइज करते हैं. तो at t is equal to 0 minus switch is closed. So आपको सर्किट को मॉडिफाई करना पड़ेगा और सर्किट के मॉडिफिकेशन में क्या हो जाएगा. सो आपको ये स्विच इधर शॉर्ट सर्किट है करके दिखाना पड़ेगा. तो मैंने ये मॉडिफिकेशन कर दिया है. And this voltage, this nodal voltage, you have to show as either you can show it over here or you can show it over this. It becomes V0 minus. So this node is directly connected to the reference node over here through this short circuit. So V0 minus का वैल्यू तो आपको मिल जाएगा. This turns out to be 0 volt. अभी हम लोग एनालाइज करेंगे t is equal to 0 plus पे क्या हो जाता है. तो t 0 plus पे आपको स्विच का पोजीशन क्या है, ओपन. सो स्विच इज ओपन. तो आप ये स्विच हटा दीजिए एंड फॉर अ सडन एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज और करंट कैपेसिटर एक्ट्स एज, फॉर सडन चेंज कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट. तो स्विच तो आपको ओपन करने का है और कैपेसिटर जो है वो आपको शॉर्ट सर्किट दिखाने का है. रेजिस्टर के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता है, रेजिस्टर एज इट इज रहेगा. सो ये आपको मॉडिफिकेशन करने का है. ये स्विच तो ओपन हो गया है और कैपेसिटर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट. So this voltage now you have to show at V0 plus. So V0 plus अभी भी क्या हो जाएगा. तो आप देखिए V0 plus. Now this node is connected to reference node or you can say ground node through this short circuited capacitor. So V0 plus अभी भी रहेगा आपका 0 volt. You are aware of that thing that the voltage across the capacitor cannot be suddenly changed. तो t is equal to 0 minus पे कैपेसिटर के ऊपर 0 volt था. अभी कैपेसिटर itself will act as a short circuit and it will maintain the voltage across it as 0 volt. We will proceed for the analysis of the circuit for t greater than 0. So for t greater than 0, this component will start showing their property. So capacitor comes into picture and we have to just modify this switch position. The switch is not there at all because it is now acting as an open circuit. And this is the circuit that you will obtain for any value of t which is greater than 0. So this voltage I will show as V of t. Now we have to find out this voltage, so we will prefer KCL. So I will apply KCL at this node, and KCL is nothing but summation of incoming current or other outgoing current is equal to summation of incoming current. This is the incoming current 10 ampere, so that I will write down on RHS, and remaining two currents I will assume as outgoing. So this downward current you can easily write down. Current starts at a node which has voltage V of t, ends at ground, so minus 0, divided by 2000, 2 kilo ohm है. So ये हो जाएगा 2000. And now you have to write down the current through the capacitor. Current through the capacitor is given by the formula C dV by dt. So I will write down that formula, and the value of C is nothing but 4 microfarad. So 4 into 10 to the power minus 6 dV of t by dt. तो ये इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है. सो विल कॉल दिस एज इक्वेशन ए एंड विल पुट द वैल्यू ऑफ t एज 0 प्लस. सो दिस विल बिकम V0 प्लस बाय 2000 प्लस 4 into 10 to the power minus 6 dV0 plus by dt and this is equal to 10. अच्छा, अभी V0 plus का क्या वैल्यू आया था, जस्ट चेक करो. V0 plus का वैल्यू आया था 0 volt. So this turns out to be 0. And you can easily find out the value of dV0 plus by dt. I am writing over here. So dV0 plus by dt turns out to be 10. और ये 10 to the power minus 6 तो इधर जाके हो जाएगा 10 to the power 6 और ये 4 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. And this turns out to be 2.5 into 10 to the power 6. Now you have to write down the unit. So ये डेरिवेटिव है, so इसका यूनिट आ जाएगा वोल्ट पर सेकेंड. Now we have to calculate second derivative of the voltage with respect to time at t is equal to 0 plus. For that purpose, we will differentiate
equation A with respect to t, so that double derivative term is made available. So इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा dv of t by dt, और ये 1/2000 will be outside, and this part will become 4 into 10 to the power minus 6, and it will become d2v of t by dt square, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0. Now we can easily put the value of t is equal to 0 plus. So this will become 1/2000, और dv 0 plus by dt अभी अभी कैलकुलेट किया है, so that I am writing 2.5 into 10 to the power 6 plus 4 into 10 to the power minus 6, and here you will have second derivative of the voltage d2v by dt square as 0. So हम लोग d2v by dt square का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, and that turns out to be, ये उधर चला जाएगा, so this will become minus 2.5 into 10 to the power 6 divided by 2000, और ये 4 into 10 to the power minus 6 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो ये आप सॉल्व करेंगे, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 3.125 into 10 to the power 8 volt per second square. So हम लोग ने सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज एट t is equal to 0 plus कैलकुलेट किया है. मैंने इधर बाय मिस्टेक इधर t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, सो हियर आई एम मेकिंग दिस मॉडिफिकेशन. इधर आ जाएगा 0 plus, इधर भी आ जाएगा ये 0 plus. So be careful, the value turns out to be minus 3.125 into 10 to the power 8 volt per second square. So we analyze the parallel RC circuit with the sudden application of the current or voltage, you can say. Thank you.